Okay, so guys start करते हैं our next topic that is a malware threats। जो हमारा हमने लास्ट सेशन में अपने नेटवर्क बेस्ड सिस्टम हैकिंग करी थी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है that is a malware threats part, right? So malware threats में सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि malwares होते क्या हैं, right? So malware क्या है? If I am talking about the malware is nothing else that is a type of code, yeah, you can say that is a type of malicious code. The exact word that is a malicious one, right? So the malware is basically a type of malicious code that is basically going to design to intended to harm a particular system as well as the network। मतलब malwares आपके कोड हैं, किस टाइप के malicious कोड हैं जिनको डिजाइन करने का मतलब ही यही है, सेंस ही यही है कि इनको डिजाइन किया जाता है आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए या आपके पर्टिकुलर नेटवर्क को हार्म करने के लिए। ठीक है, किसी न किसी तरीके की कोई एक्टिविटीज, कुछ आपके डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैलवेयर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैलिशियस कोड को क्रिएट करते हैं। ये मैलिशियस कोड अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकता है। that will be a type of created by the scripting languages, like आप Python में क्रिएट कर सकते हो, बैश में क्रिएट कर सकते हो, शेल में क्रिएट कर सकते हो। दे आर लाइक किसी और लैंग्वेज में आप अगर चाहते हो उसको एपीके में आप उसमें जनरेट कर सकते हो, आप प्री एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेज में जनरेट कर सकते हो। मल्टीपल लैंग्वेजेस है इसको क्रिएट करने के, रूबी में कर सकते हो, पर्ल में कर सकते हो, है ना। हर टाइप की आपकी जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है हम उनका यूज कर सकते हैं अपने मैलिशियस कोड को क्रिएट करने के लिए। क्लियर? सो ये मैलिशियस कोड कभी भी सिंपली रन नहीं करता किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये किस टाइप के मैलिशियस कोड होता है? इट्स द टाइप ऑफ मैलिशियस कोड जो कि इट्स लुक टू सीम्स लाइक अ बेनिफिशियल थिंग टू द यूजर, and once the user is basically going to click on that and just go to the just forward to the running as well as the installation process, then that software is basically which the software is basically going to bind of this particular malware, then it is going to run। सो क्या होता है वहां पे कि जितना भी आपका कोई भी मैलिशियस कोड है, जो वो मैलिशियस कोड के साथ अगर हम किसी सॉफ्टवेयर, इस मैलिशियस कोड को हम किसी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी नेटवर्क के साथ, किसी पर्टिकुलर आपके फाइल के साथ, लाइक दैट विल बी अ टाइप ऑफ मीडिया फाइल्स, लाइक इमेजेस हो गए आपके या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी फाइल्स हो गई, या फिर आपके डॉक्यूमेंट फाइल्स हो गई, या आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स हो गई लाइक EXE फाइल्स हो गई, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, इस कोड को बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस कोड को हम क्या करते हैं, बाइंड कर देते हैं। तो उस टाइप के हम मैलिशियस कोड को क्या बोलते हैं, कंप्लीट जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बन के रेडी होता है उसको हम बोलते हैं मैलवेयर। क्लियर है? यस सर। ये जो मैलिशियस कोड होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, ये डिजाइन ही इसलिए किए जाते हैं दैट मैलिशियस सॉफ्टवेयर बेसिकली इंटेंडेड टू हार्म सॉफ्टवेयर। इनको आप बोल सकते हो अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर व्हिच इज बेसिकली गोइंग टू डिजाइन दैट इंटेंडेड टू हार्म, यानी कि किसी भी सिस्टम को या किसी भी नेटवर्क को हार्म करने के लिए इनका क्या किया जाता है, इनको डिजाइन किया जाता है। ये है क्या, a software that dispute or alter the normal operation of an electronic device। जो भी हमारा नॉर्मल ऑपरेशन होता है, नॉर्मल आपके फंक्शंस काम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, उसके अंदर डिस्प्यूट क्रिएट करना इसका मेन टारगेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुड बी एनीथिंग, आइदर अ मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, या आपके मोबाइल डिवाइस हो सकते हैं, आपके फोन्स हो सकते हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकते हैं, किसी भी टाइप का आपका एक डिवाइस हो सकता है, या आपके नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर कोई डिस्प्यूट क्रिएट करता है तो उसको हम बोलते हैं मैलवेयर। क्लियर है? अब ये मैलवेयर्स काम किस तरीके से करते हैं, फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दैट थिंग लाइक हाउ इट बेसिकली वर्क्स। मैलवेयर्स जो हैं वो आपके किस तरीके से काम करते हैं। तो इट इन्फेक्ट अ डिवाइस और मशीन बाय ट्रिकिंग यूजर और क्लिकिंग ऑन इंस्टॉलिंग अ प्रोग्राम, जो कि यूजर को नहीं करना चाहिए था। और जैसे ही एग्जीक्यूट करता है देन सेवरल एक्शंस विल बी परफॉर्म which comes under the category of, we can say that is the effect of malware। सो पहली चीज, एक चीज समझो, मैलवेयर जो होते हैं कभी भी खुद से अपने आप कोई एक्टिविटीज नहीं करते हैं। अगर हम मैलवेयर्स की बात करें, इसमें कुछ टाइप के मैलवेयर्स ऐसे होते हैं जिनको रन करने के लिए यूजर्स के एक्शंस की नीड होती है।
once a user is not going to run that thing on your system, like अगर उसने डबल क्लिक करके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है, तो मे बी दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट सॉफ्टवेयर इज नॉट गोइंग टू इंस्टॉल ऑटोमेटिकली इन देयर सिस्टम, राइट? सो ये जो होता है ये बेसिकली काम करने का तरीका है, यानी इसको अगर आपको एक्शंस में इम्प्लीमेंटेड करना है, इसको रनिंग में लाना है, तो आपको यूजर की तरफ से उसको किसी न किसी तरीके का इनपुट देना पड़ेगा, एंड इनपुट इज बेसिकली a type of double click on that particular software to run the, yeah, to install the application. Clear है? अब इसके लिए क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के इफेक्ट्स पड़ते हैं आपके मेलवेयर्स अगर आते हैं तो अलग अलग कैटेगरी इफेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला इफेक्ट होता है खुद से रेप्लिकेट करना। आपका मेलवेयर जो है वो रेप्लिकेशन प्रोसेस में बिलीव रखता है। रेप्लिकेशन प्रोसेस इन द सेंस, अगर आप इसे एक बार रिमूव करते हो तो ये खुद से क्रिएट हो जाते हैं, तो रेप्लिकेट करते हैं। इवन अगर फाइल्स के अंदर पड़े हुए हैं तो खुद से भी कई बार क्या होते हैं, क्रिएट होने लगते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, खुद से रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट होता है आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करना, ताकि आपको पता भी ना चले। की स्ट्रोक यानी कि आप जो भी कमांड्स यूज कर रहे हो, आप जो भी एक्टिविटीज यूज कर रहे हो, उन सबको क्या करते हैं, ये रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइक आपने जो भी चीजें वहां पे यूज करी हैं, लाइक आपने कमांड्स में लाइक कोई यूजर नेम डाला, कोई पासवर्ड डाला, या फिर आपने किसी भी टाइप की कोई वहां पे कमांड यूज करी रन करने के लिए, आप की स्ट्रोक जो है आपके दो टाइप से सेव करता है, ये या तो स्क्रीनशॉट्स में सेव करता है, या तो वो आपके कमांड्स बेस पे सेव करता है, ठीक है? तो की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करते हैं, ये हो सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर। सर्विसेज आपको सर्विस एक्सेस करने से रोक देते हैं, लाइक सपोज दैट यू जस्ट गोइंग टू रन, यू जस्ट गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ सर्विस दैट इज अ टास्क मैनेजर। आप नॉर्मली टास्क मैनेजर ओपन करने जाते हो, राइट क्लिक करते हो टास्क बार पे, और उसके बाद टास्क मैनेजर पे क्लिक करते हो, और वहां पे आपको एक मैसेज आता है, दिस सर्विस इज बेसिकली ब्लॉक्ड बाय द, या होल्ड बाय द, या डिसेबल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। सो दिस टाइप ऑफ थिंग इज बेसिकली इफेक्ट ऑफ मेलवेयर, जो कि आपको वहां देखने को मिलती है। दूसरा, आपके ब्राउजर्स को एड से भर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास कई सारे ब्राउजर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपका एक ब्राउजर है, आपने गूगल क्रोम ओपन किया है, या फिर आपने डिफरेंट लाइक फायरफॉक्स ओपन किया, उस पे क्या होता है, कई सारे एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट टाइप ऑफ मेलवेयर आर बेसिकली कॉल्ड एज अ एडवेयर्स टाइप ऑफ मेलवेयर, हम उसको एडवेयर्स बोलते हैं, ठीक है? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का मेलवेयर है, वो किस तरीके की वो आपके क्या कर रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है। So these are all the categories of the effect of malware once a particular malware is basically going to enter your system. Clear है? नॉर्मल इंसान इन सारे टाइप के मेलवेयर्स को क्या बोलता है, इट्स जस्ट अ वायरस। तो वो इन सबको क्या बोलता है, केवल एक वायरस है। ओके, सो हमारे पास क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी मेलवेयर। क्रिप्टो करेंसी मेलवेयर क्या है? तो पहले तो ये बताओ, ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी नो अबाउट द क्रिप्टो करेंसी? कितनों को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? वर्चुअल करेंसी ना, वर्चुअल करेंसी, ओके। बिटकॉइन। बिटकॉइंस, ओके बिटकॉइन लिटकॉइन वगैरह में आती है सर, डॉग कॉइन वगैरह। ओके। हम क्या बोलते हैं इन्हें, डिजिटल करेंसी बोलते हैं, राइट? ओके, सो कभी कुछ सोचा है कि क्रिप्टो करेंसी टाइप का कोई मेलवेयर भी हो सकता है हाँ सर, है ना? और वो सो माइनिंग के लिए बॉटनेट यूज करते। एग्जैक्टली, सो क्रिप्टो करेंसी मेलवेयर काम करता है आपका क्रिप्टो हाईजैकिंग प्रोसेस के ऊपर, और इसमें जो यूज होता है प्रोसीजर, दैट इज अ क्रिप्टो माइनिंग। कौन सा प्रोसीजर यूज होता है? क्रिप्टो माइनिंग का। ये जो क्रिप्टो माइनिंग है बेसिकली, ये आपकी वर्क करती है आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइक एक्टिविटी, लाइक आपके सिस्टम्स के बेसिस पे, जो कि क्रिप्टो जनरेट करते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि हमारी बिटकॉइन हो गई या इथेरियम हो गई, किसके बेसिस पे क्रिएट करते हैं? आपके जीपीयू बेसिस पे, है ना? तो कई सारे क्रिप्टो करेंसी मेलवेयर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सिस्टम में अगर इंस्टॉल कर दिया जाए तो आपके सिस्टम का जीपीयू यूज करके क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी टाइप के मेलवेयर कोड्स को यूज करती हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने जैसे कोई वेबसाइट ओपन करी,
वेबसाइट ओपन करते ही आपका सिस्टम नॉर्मल चल रहा था, उससे पहले जैसे आप ओपन करते हो आपके सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, एकदम से फैन तेज चलने लगता है ना, या फिर आपका फैन तेज चलने लगता है प्लस आपका सिस्टम हीटअप होने लगता है। कभी ऐसा कुछ एनालाइज किया है किसी वेबसाइट को ओपन करने पर? क्या आपने कोई वेबसाइट ओपन करी हो और आपका सिस्टम जो है फैन तेज हो गया हो? नहीं सर, ऐसा तो हुआ, ऑब्जर्व नहीं किया होगा कभी अब से We ऑब्जर्व करना, ठीक है। सर। आप कोई भी वेबसाइट लाइक कोई हैवी वेबसाइट ओपन करते हो नॉर्मली, और आप देखते हो कि दैट वेबसाइट जैसे आपने ओपन करी उसके बाद आपका सिस्टम जो है वो तेज चलने लगा, या फैन बहुत तेज चलने लगा, साउंड करने लगा आपके सिस्टम का फैन, है ना, या वो हीट होने लगा। क्यों होता है? बिकॉज आपके सिस्टम के अंदर जो जीपीयू है उसका यूज करके मे बी दैट वेबसाइट इज यूजिंग अ टाइप ऑफ मेलवेयर, जिसमें वो क्या कर रही है, मेलवेयर्स का यूज कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी मेलवेयर अगर वो यूज कर रहे हैं तो उस केस में ऐसे इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इट्स अ सिंपल कोड, लाइक 3 से 4 लाइन का एक कोड होता है जो वेबसाइट्स के अंदर ऐड करने से आपके सिस्टम्स के बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो क्रिप्टो करेंसी मेलवेयर को देखने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट्स सी ए स्मॉल वीडियो सो वी विल इजीली अंडरस्टैंड हाउ द क्रिप्टो करेंसी मेलवेयर आर बेसिकली गोइंग टू वर्क। Growing businesses need a hosting solution that is powerful yet easy to manage. Let's look at how The Byzantine generals problem was first introduced in a computer science paper published in 1982. The problem discussed in the paper is that reliable computer systems must be able to function effectively in the presence of faulty components that may send conflicting information to different parts of the system. This issue is even more acute when we talk about decentralized computer networks. Imagine the following thought experiment. The Byzantine army has surrounded an enemy city. The army is organized into several units. Each unit is commanded by a general, and they all need to come up with a coordinated plan of action. However, they are located away from each other, and the only means to communicate among themselves is via messages. To make things more complicated, one or more of the generals are possibly traitors. The presence of disloyal generals means that misleading messages could be sent aiming to disrupt any coordinated plan of action, be it attack or retreat. To find a successful solution to this conundrum, the Byzantine army needs to find its path to coordinated action one way or another. To achieve this, the Byzantine army needs an algorithm that works effectively towards a coordinated outcome where the loyal generals follow it and the traitors don't. Now that you're familiar with the problem, let's see its solution. It's called the Byzantine fault tolerance algorithm. Over the years, there have been several proposed theoretical solutions involving game theory and math. The first practical implementation of Byzantine fault tolerance algorithm came with the Bitcoin's proof of work. In this case, the generals are nodes on the Bitcoin network, also known as miners. A network node is a connection point that can receive, create, store, and send data across a network. In other words, nodes are the connected dots that make up a network. To simplify, think of it in the following way. In the image we traditionally use to depict a blockchain, every single computer is a separate node. They are all connected and can receive, create, store, and send data to each other. In the context of the Byzantine fault tolerance algorithm, the important concept to grasp is that these mining nodes start from the assumption that nobody else on the network can be trusted. Proof of work secures network consensus, even in the presence of non-compliant nodes. That is, even if there are some Byzantine generals who are not acting in the army's best interest, coordinated action can still be achieved. Let's see how this mechanism works in Bitcoin. As we all know, Bitcoin is a peer-to-peer network where all activities are done by its users through appropriate software and hardware. These activities include making transactions, receiving transactions, and verifying and transmitting transactions. Now, this is where we need to introduce the concept of mining, which many of you have probably heard. Mining is an activity carried out by network participants which involves proof of work
and results in generating new coins as a reward for the miner who successfully did this proof of work first for each new block. Proof of work requires a hefty number of calculations done by a computer aimed at solving cryptographic hash puzzles. These are the same puzzles described earlier, enabling the network to function and to continue exchanging transaction messages with other network participants. Let's dig into the nuts and bolts of this mechanism to figure out how it works. First, let's see how miners create new blocks. Mining nodes collect and aggregate new transaction data. Upon receiving such data, each node independently verifies each and every transaction against a long list of criteria, including tracking the source of the digital money being spent, checking for double spending of the same money, checking if the total transaction volume is within the allowed range of 0 to 21 million bitcoins, as 21 is the maximum total supply of Bitcoin allowed by the system. And the list goes on. The Bitcoin software installed on the node performs a number of other checks and balances. Verified transactions are aggregated into transaction pools, also called memory pools or mempools, where they wait until they are included into a block. As miners compete with each other to be the first one to come up with a new valid block, they need to make sure the transactions in their mempools have not already been included in previous blocks. After collecting and arranging verified transactions in a candidate block, the miner needs to construct the block header, which includes a few important components: a summary of all the transaction data in the candidate block, a link to the previous block in the chain, also known as a parent block, a timestamp showing the time of creation of the block, and a valid proof of work. The summaries of what's included in a given block are done through hash functions, which process data in such a way that results in a standardized unique identification code. This identification code is also referred to as a digital fingerprint. In this way, the system has a unique identifier for each block of transactions. Here are some examples of block headers as viewed in blockexplorer.com and blockchain.info. As you can see on top, just below the block number, there is a long alphanumeric string called block hash, or just hash. Alphanumeric means that it consists of both letters and numbers. This is a type of encoding data and is the output result of processing the block header data below through Bitcoin's cryptographic hash function. You may have heard the name of this function, SHA-256, which stands for Secure Hash Algorithm. You probably remember that we mentioned and briefly explained hash functions in the section about cryptography. We are discussing them again here because they play such an important role in proof of work. As we've learned, a hash function can digest any kind of data of any size into a fixed length string of characters, which can serve as a unique digital fingerprint or identifier. Moreover, these cryptographic hash functions only work in one direction. Once we have the output, we cannot simply invert the function, plug in the output, and get input data on the other end. To illustrate what it means to invert a function, consider the four basic mathematical operations. Addition and subtraction are inverse functions of each other. Multiplication and division are inverse functions of each other. We can always construct equations with these functions to find any unknown variable. For example, 3 times x equals 15. X equals 15 divided by 3 equals 5. Many mathematical functions can be inverted in a similar way. However, this is not the case with cryptographic hash functions. The only feasible way an unknown random variable can be found in a cryptographic function's input data set is by trying different values for the unknown one by one, given all the known parameters in order to find out what works. This is basically a brute force approach of trying potentially all possible combinations. And this is precisely the element of work as used in proof of work. The work comprises all the iterative computations a computer needs to do to find a solution of the cryptographic puzzle. गाइस क्लियर हुआ थोड़ा सा कि आपका बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या और किस तरीके के क्रिप्टो मेलवेयर काम करता है?
all of you? हाँ सर. ओके, सो बिटकॉइंस के लिए क्रिप्टो करेंसी जो हम करते हैं वो किस तरीके से चलती थी. देखो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी मेलवेयर्स था कि कैसे काम करते हैं. अब आपको एक क्रिप्टो करेंसी पता है, दैट इज द बिटकॉइन, राइट. सो हाउ द बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इज बेसिकली वर्क, लाइक किस तरीके से माइनिंग होती है, कैसे प्रोसेस होती है. नाउ इट विल शो यू ऑल द थिंग्स. Say there's a coin that's currently worth hundreds of US dollars, but it's not made of gold or platinum or any precious metal. In fact, it's not the kind of coin you can hold in your hand or stick in a piggy bank. It's a digital currency, which means it only exists electronically. I'm talking about Bitcoin. Bitcoin doesn't work like most money. It isn't attached to a state or government, so it doesn't have a central issuing authority or regulatory body. Basically, that means there's no organization deciding when to make more Bitcoins, figuring out how many to produce, keeping track of where they are, or investigating fraud. So how does Bitcoin work as a currency, or have any value at all? Well, Bitcoin wouldn't exist without a whole network of people and a little thing called cryptography. In fact, it's sometimes described as the world's first cryptocurrency, and here's how it works. Bitcoin is a fully digital currency, and you can exchange Bitcoins between computers in a worldwide peer-to-peer network. The whole point of most peer-to-peer networks is sharing stuff, like letting people make copies of super legal music or movies to download. If Bitcoin is a digital currency, what's stopping you from making a bunch of counterfeit copies and becoming fabulously wealthy? Well, unlike an MP3 or a video file, a Bitcoin isn't a string of data that can be duplicated. A Bitcoin is actually an entry on a huge global ledger called the blockchain, for reasons we'll get to in a minute. The blockchain records every Bitcoin transaction that has ever happened. And as of late 2016, the complete ledger is about 107 gigabytes of data. So when you send someone Bitcoins, it's not like you're sending them a bunch of files. Instead, you're basically writing the exchange down on that big ledger, something like Michael sends Hank 5 Bitcoins. Now, maybe you're thinking, but wait, you said that Bitcoin doesn't have a central authority to keep track of everything. Even though the blockchain is a central record, there's no official group of people who update the ledger and keep track of everybody's money like a bank does. It's decentralized. In fact, anybody can volunteer to keep the blockchain up to date with all the new transactions, and a ton of people do. It all works because there are lots of people keeping track of the same thing to make sure all transactions are accurate. Like, imagine you're playing a game of poker with some pals, but none of you have poker chips and you left your cash at home. There's no money on the table, so a few of you get out some notebooks and start writing down who bets how much, who wins, and who loses. You don't completely trust anyone else, so everyone keeps their ledgers separately. At the end of every hand, you all compare what you've written down. That way, if someone makes a mistake or tries to cheat and snag some extra money for themselves, that discrepancy is caught. After a couple of hands, you might fill up a page of your notebook with notes about the money movement. You can think of each page as a block of transactions. Eventually, your notebook will have pages and pages of information, a chain of those blocks, hence blockchain. Now, if thousands of people are separately maintaining the Bitcoin blockchain, how are all the ledgers kept in sync? To stick with our poker analogy, think of the entire Bitcoin peer-to-peer network as a really huge poker table with millions of people. Some are just exchanging money, but lots of volunteers are keeping ledgers. So when you want to send or receive money, you have to announce it to everyone at the table, so the people keeping track can update their ledgers. So for every transaction, you're announcing a couple of things to the Bitcoin network: your account number, the account number of the person you're sending Bitcoins to, and how many Bitcoins you want to send. And all of the users who are keeping copies of the blockchain will add your transaction to the current block. Having a bunch of people keep track of transactions seems like a pretty good security measure. But if all it takes to send Bitcoins is a couple of account numbers, that seems like it might be a security problem. It's a huge problem with regular money. Just think of all the ways criminals try to steal other people's credit card information. And with Bitcoin, there's no central bank to notice anything weird going on to shut down fraud, like if it looked like suddenly you spent your entire life savings on beef jerky. So what's stopping Hank from pretending he's me and just sending himself all of my Bitcoins? Bitcoins are kept pretty safe thanks to cryptography, which is why it's considered a cryptocurrency. Specifically, Bitcoin stays secure because of keys, which are basically chunks of information that can be used to make mathematical guarantees about messages, like, hey, this is really from me. When you create an account on the Bitcoin network, which you might have heard called a wallet, that account is linked to two unique keys: a private key and a public key. In this case, the private key can take some data and basically mark it, also known as signing it, so that other people can verify those signatures later if they want. So let's say I want to send a message to the network that says, Michael sends 3 Bitcoins to Olivia. I sign that message using my private key, which only I have access to and nobody else can replicate. Then I send that signed message out to the Bitcoin network, and everyone can use my public key
to make sure my signature checks out. That way, everyone keeping track of all the Bitcoin trading knows to add my transaction to their copy of the blockchain. In other words, if the public key works, that's proof that the message was signed by my private key and is something I wanted to send. Unlike a handwritten signature or a credit card number, this proof of identity isn't something that can be faked by a scam artist. The who part of each transaction is obviously important to make sure the right people are swapping Bitcoins, but the when matters as well. If you had $1,000 in your bank account, for example, and tried to buy two things for $1,000 each, the bank would honor the first purchase and deny the second one. If the bank didn't do that, you'd be able to spend the same money multiple times, which might sound awesome, but it's also terrible. A financial system can't work like that because no one would get paid. So if I only have enough money to pay Olivia or Hank, but I try to pay them both, there's a check built into the Bitcoin system. Both the Bitcoin network and your wallet automatically check your previous transactions to make sure you have enough Bitcoins to send in the first place. But there's another problem that might happen with time. Because lots of people are keeping copies of the blockchain all over the world, network delays means that you won't always receive the transaction requests in the same order. So now you've got a bunch of people with a bunch of slightly different blocks to pick from, but none of them are necessarily wrong. Okay, Bitcoin, how do you solve that problem? It turns out it's by actually solving problems. Math problems. To add a block of transactions to the chain, each person maintaining a ledger has to solve a special kind of math problem created by a cryptographic hash function. A hash function is an algorithm that takes an input of any size and turns it into an output with a fixed size. For example, let's say you had this string of numbers as your input, and our example hash function says to add all of the numbers together. So in this case, the output would be 10. What makes hash functions really good for cryptography is that when you're given an input, it's really easy to find the output, but it's really hard to take an output and figure out the original input. Even in this super simple example, there are lots of strings of numbers that add up to 10. The only way to figure out that the input was 1, 2, 3, 4 is to just guess until you get it right. Now, the hash function that Bitcoin uses is called SHA-256, which stands for Secure Hash Algorithm 256-bit, and it was originally developed by the United States National Security Agency. Computers that were specifically designed to solve SHA-256 hash problems take, on average, about 10 minutes to guess the solution to each one. That means they're churning through billions and billions of guesses before they get it right. Whoever solves the hash first gets to add the next block of transactions to the blockchain, which then generates a new math problem that needs to be solved. If multiple people make blocks at roughly the same time, the network picks one to keep building upon, which becomes the longest and most trusted chain. And any transactions in those alternate branches of the chain get put back into a pool to be added onto later blocks. These volunteers spend thousands of dollars on special computers built to solve SHA-256 problems and run their electricity bills up sky high to keep those machines running. But why? What do they get out of maintaining the blockchain? Is it just community service? Well, Bitcoin actually has a built-in system to reward them. Today, every time you win the race to add a block to the blockchain, 12.5 new Bitcoins are created out of thin air and awarded to your account. In fact, you might know the Bitcoin ledger keepers by another name, miners. That's because keeping the blockchain updated is like swinging a proverbial pickaxe at those hash problems, hoping to strike it rich. When Bitcoins were first created in 2009, they didn't really have any perceived value. Tens of Bitcoins would have been worth the same as a bunch of pennies. As of November 10th, 2016, though, one Bitcoin is worth $708 US. So 12.5 Bitcoins are worth $8,850. That's a nice chunk of change. Every single Bitcoin that exists was created to reward a Bitcoin miner. Besides the big payout when they add a new block of transactions, miners are also essentially tipped a very small amount for each transaction they add to the ledger. It's also worth noting that every 210,000 blocks, the number of coins generated when a new block is added goes down by half. So what started as a reward of 50 Bitcoins decreased to 25, then 12.5, and it'll only be around 6 Bitcoins in a couple more years and keep decreasing. Eventually, there will be so many transactions in a block that it'll still be worthwhile for miners to mostly be paid in tips. According to current projections, the last Bitcoin, probably around the 21 millionth coin, will be mined in the year 2140. This decreasing number of Bitcoins is actually modeled off the rate at which things like gold are dug out of the earth. And the idea is that keeping the supply of Bitcoins limited will raise their value over time. So is investing in Bitcoin a good idea? Now that's not really a SciShow kind of question. Bitcoin is still volatile and experimental. A lot of people love it and a lot of people think it's doomed to fail. We just think it's an interesting idea and it makes us wonder what cryptography might do for us next. Thanks for watching this episode of SciShow, brought to you by our patrons on Patreon. If you want to help support the show, just go to patreon.com/SciShow. And don't forget to go to youtube.com/SciShow and subscribe. Quantum computers are exciting because they can carry out multiple. सर मैं बिटकॉइंस का कि बिटकॉइंस क्रिप्टोकरेंसी का मेलवेयर किस तरीके से क्रिप्टोकरेंसी होती है और कैसे काम करती है. हाँ थोड़ा बहुत. Okay.
सो अब अगर आपको बिटकॉइंस जनरेट करने हैं अपने सिस्टम के थ्रू और आप चाहते हो उसको जनरेट करना, ठीक है, लाइक किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस चलती है, जनरेशन प्रोसेस, एंड इफ यू वांट टू लर्न दैट थिंग, तो उसके लिए एक नीचे और है, मैंने क्रिप्टो माइनिंग का एक लिंक दे रखा है, जस्ट गो ऑन दैट लिंक एंड यहाँ से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग वेबसाइट, लॉन्ग वीडियो, सो आराम से आप घर पे देखना इसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रिप्टो माइनिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं और आप कैसे कर सकते हो। क्लियर? Yes, ओके, sir. नेक्स्ट अब बात करते हैं हाउ वी गेट आवरसेल्फ टू इंस्टॉलिंग अ मेलवेयर। हम किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं मेलवेयर्स को इंस्टॉल करने में। तो जस्ट अ सिंपल प्रोसेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मेलवेयर, देयर आर सम टेक्निक्स, और वी कैन से दैट कि प्रोवाइड बाय द अटैकर्स टू मेक क्लिक ऑन सच डॉक्यूमेंट और अ लिंक ऑन इंस्टॉलिंग एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर। लाइक द सिंपल थिंग्स होती हैं जिनका हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर। एंड तो किस तरीके से इंस्टॉल होता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर आपके, लाइक देखो कोई भी मेलवेयर मैंने आपको बताया ऑटोमेटिकली नहीं आता किसी भी सिस्टम के अंदर। मेलवेयर लाने के लिए सबसे जो मेन चीज होती है वो क्या होता है, यूजर्स की इन्वॉल्वमेंट। हम क्या करते हैं, लाइक हमें बचपन से हमने देखा है कि कोई भी प्रोग्राम हमको मिला तो जस्ट उस पर डबल क्लिक करके रन कराओ विंडोज के अंदर एंड जस्ट नेक्स्ट 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 वो प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाता है। वी कैन डू द सेम थिंग फॉर द ऑल प्रोग्राम्स, राइट? यही हम करते हैं आज तक, यही हम करते हैं। कोई भी जना बहुत रेयर पर्संस होते हैं जो इंस्टॉलेशन के टाइम पे स्टेप्स को पढ़ता है, अदरवाइज आपको पता है कि नेक्स्ट करो या नेक्स्ट 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 करो और उसके बाद क्या होता है, फिनिश ऑप्शन आ जाता है, कंप्लीट आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, राइट? हमेशा से बचपन से यही चीज देखी है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, दिस इज अ फ्लॉ एक्चुअली। क्या फ्लॉ है कि आपका जो मेलवेयर्स है बेसिकली वो इसीलिए इंस्टॉल होता है बिकॉज सपोज दैट आई एम जस्ट बाइंडिंग अ मेलवेयर विद अनदर सॉफ्टवेयर अनदर फाइल, एंड आप उस सॉफ्टवेयर को जैसे रन कराते हो और उसके बाद होता क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्लीटली दूसरी तरीके से वर्क करने लगता है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर जो है उसके साथ जो बाइंडेड सॉफ्टवेयर है वो भी रन होता है और आप क्या करते हो, जस्ट नेक्स्ट 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 करने के साथ उसको इंस्टॉल कर देते हो, ठीक है। सो ये जो चीज है ये आप बेसिकली कैसे करते हो, इंस्टॉलेशन है मेलवेयर के थ्रू। क्लियर हुआ हमारे लिए क्या होती है फ्लॉ जिसके थ्रू हमारे मेलवेयर जो होते हैं वो बेसिकली सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल के साथ, किसी भी टाइप की एग्जीक्यूटिव फाइल के साथ या किसी भी टाइप के मीडिया फाइल्स के साथ, राइट? अब मेलवेयर्स काम कैसे करते हैं सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो मेलवेयर्स देखे, मेलवेयर के टाइप पढ़ा, वो सब हमें बताया, पता चला मेलवेयर के इफेक्ट किस तरीके के होते हैं, प्लस मेलवेयर क्रिप्टोकरेंसी मेलवेयर क्या है। नाउ वी लेट्स डिस्कस अबाउट द मेलवेयर हाउ इंस्टॉल, किस तरीके से आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है और वर्क करता है। Again, how does this keep happening? I installed a new antivirus. Why am I getting viruses? They told me I wouldn't get any more viruses on their website when I downloaded their software. Why am I getting viruses and malware? And it just seems like it never stops. How? How is this still happening? Hi, folks. It's Falcon. And today on Waste Time, we ask the question, how do viruses and malware infect your computers? Viruses have been around a long time. Two brothers from Pakistan released one of the first computer viruses, Brain, in January 1986. They actually did it without any kind of malicious intent and included their real phone numbers in the code so people could call them and have it removed from their computer. Viruses go back a few years before that. For instance, the elk cloner virus in 1982 was, well, made as a joke. Since then, viruses and malware have developed a significant amount. It's not always easy to get one off your computer, and it's quite annoying to find out that you have a new one on it, but they're always developing, always creating new ones, and constantly evading detection. So how do you get one? So let's talk about the most common way first. Email. You know how you get a message that doesn't necessarily look like a real message or have a real attachment on it or seem entirely legitimate? People can often still be pretty stubborn and go ahead and click it anyway. Or maybe they don't know. Maybe it does look like a legitimate email. For instance, that Google Docs thing that sent out tons of emails before getting shut down very quickly. It's not impossible for a smart person to fall for something like that,
where it uses actual Google encryption to continue what it's doing. But a lot of viruses spread themselves simply by counting on the fact that some people are, well, stubborn. Oh, my grandson tells me not to click these links, but this says that indeed I will be receiving a large sum of money if I do click them, so I will. Oh, look at that. I have another virus. Better call my grandson. But one would assume that if you have antivirus software installed, that would still stop it. Not entirely the case. Often little bits of viruses or malware are modified as antivirus software is given the ability to recognize it. For instance, its name could be changed. Now, I would hope that you're not using a virus scanner that just decides it's not a virus because somebody added not a virus into the file name or something like that. No, it's a completely different, there's characters in it that aren't in the virus one, so, but I'm oversimplifying it for the purpose of understanding what goes on. Lines of code may be changed, rearranged. It could get embedded into another file, like a Word file. An antivirus program can only detect things that it recognizes, and for it to recognize something, it has to have a copy of it somewhere. Whether it's in its own files or it pings a cloud somewhere that has all the viruses, I don't know. Now, that doesn't mean every virus scanner has a copy of every single virus, but it does have a file that contains certain amounts of information and code from viruses. Assuming you reverse engineered this file and found exactly how it was recognizing your virus and changed that, it would probably stop recognizing your virus. Another very popular way is social media or, well, pirating stuff. Social media in that you can pretty much post a link to anything and people will click it. Hey, this person I follow on Twitter just posted a link about how you should always buckle your seatbelt. Oh, well, he must have posted it for some reason. It can't just be that. It has to be like a good seatbelt PSA. Oh, would you look at that? Ransomware. Well, that is a dick move on your part, verified user. Oh, wait, that's just his name. He's not actually verified. I've been had. And then, of course, there's pirating stuff. Something that you have no legal recourse to do. You're pretty much cornered. You're doing something that if you were to seek legal recourse on somebody giving you a virus, you would get in trouble legally with an almost certainty. Basically, a computer virus or malware infects your computer by exploiting some type of mistake you might make. It's social engineering. If you're conditioned to just click through everything, you might not actually read what you're doing. You might not pay attention. You might install something willy-nilly. There is more than a few of us that do that. I've certainly uninstalled the Yahoo toolbar about 1 million times because I clicked next too fast and didn't realize there was an option not to install it. Well, viruses basically take that concept and don't give you the option not to install it, whether it's through email, through attaching itself to other software, or any number of methods. Just be careful. Some viruses and malware are worse than others and can permanently corrupt files on your computer or make it run really badly. What's the worst virus you got? Leave us a comment, let us. Guys, clear हुआ किस तरीके से इंस्टॉल हम करते हैं? बिकॉज हम ध्यान नहीं देते कि हमारे पास जो वायरसेस आ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको हम जस्ट सिंपली नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेते हैं, राइट? यस सर. ओके, कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं आपके जो अपने लाइन ऑफ कोड को रीअरेंज करके बार बार रेप्लिकेट फाइल्स बनाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं ताकि आपका एंटीवायरस उन्हें डिटेक्ट ना कर पाए. ठीक है, तो वो भी था इसके अंदर. अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा. ओके, सो आगे चलते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ मेलवेयर्स. सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मेलवेयर्स हैं, जिनको एक नॉर्मल इंसान इन सारे मेलवेयर्स को क्या बोलता है, a virus. But still अगर आप पढ़ रहे हो तो you know very well the all categories of the malwares. तो यहाँ पे अलग अलग malware टाइप में सबसे पहले आता है वायरस, फिर आते हैं worms, फिर आते हैं कीलॉगर्स, ransomware, spywares, adwares वगैरह, लाइक ट्रोजन्स हो सकते हैं, spywares हो सकते हैं, adwares हो सकते हैं, रूट किट टाइप ऑफ वायरस होते हैं, बॉटनेट होते हैं, दैट इज रोबोट इन नेटवर्क. ठीक है, सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ वायरसेस जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पढ़ने वाले हैं. अब इन्हीं वायरसेस के अलग अलग टाइप के वायरसेस क्रिएट हुए थे, तो उन वायरसेस के बारे में भी हम देखेंगे. फर्स्टली एक एक करके समझेंगे कि वायरस किस तरीके से काम करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, वायरस नॉर्मल ऑपरेशंस के ऊपर होता है, यूजर इंप्लीमेंटेशन की नीड होती है, सिस्टम को हार्म कर सकता है. वॉर्म यूजर इंप्लीमेंटेशन की नीड होती है, ऑटोमेटिकली कभी रन नहीं होता और आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी तरीके का इफेक्ट नहीं करता है, जस्ट स्पेस कंज्यूम करता है.
की लॉगर्स आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स, चाहे वो आपके स्क्रीनशॉट में हो, चाहे वो आपके नॉर्मल उसमें हो। रैंसमवेयर आपके बेसिकली फाइल्स को दो तरीके काम करते हैं, या तो लॉक करते हैं या तो क्रिप्ट करते हैं, तो उनके बेसिस पे काम होता है। स्पाईवेयर टाइप ऑफ मेलवेयर जो होते हैं वो आपके सिस्टम का फुल एक्सेस लेके उनमें अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए यूज करे जाते हैं, जैसे ट्रोजन्स हो सकते हैं या एडवेयर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट रूट किट टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं जो कि किस लिए यूज करे जाते हैं, आपके बूट सेक्शन में बूट मैनेजर पे सेट होके आपकी फाइल्स के साथ ऑटोमेटिकली ऑल द टाइम लोड होने के लिए, तो उस टाइप के वायरसेस को हम बूट सेक्टर वायरस कहते हैं, या फिर आपका रूट किट वायरसेस। एंड बॉटनेट्स जो क्या करते हैं, आपके रोबोट इन नेटवर्क, जो एक पूरी आर्मी क्रिएट करी जाती है किसकी, बॉटनेट्स की, अलग अलग सिस्टम्स को हैक करके, किसके थ्रू, ट्रोजन्स के थ्रू। सो ये टाइप्स के मेलवेयर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे डीप में, फिर प्रैक्टिकल पार्ट सबके देखेंगे किस किस तरीके से कौन कौन क्रिएट होता है। क्लियर? नाउ अब ये तो कॉमन कैटेगरीज हो गई, ठीक है। अब कैटेगरीज के बाद कुछ टाइप के आपके मेलवेयर्स ऐसे थे जिनको हमें पता होना चाहिए कि ये सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल थे, इन्होंने कई तरीके की एक्टिविटीज भी करी थी। सो लेट्स सी अ स्मॉल टाइप ऑफ मेलवेयर्स, तो आपको पता चलेगा कि कुछ मेलवेयर्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा आपके पॉपुलर हुए हैं, सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। सो लेट्स सी, बिकॉज टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स में अगर आप मेलवेयर्स एनालिसिस करते हो आगे जाकर फील्ड सिलेक्ट करोगे साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स में पता होने चाहिए कि किस किस टाइप के ऐसे वायरसेस हैं जिन्होंने काफी मार्केट में पॉपुलर थे वर्ल्ड में, और उन्होंने किस टाइप की एक्टिविटीज करी हैं। आपको इससे देख के एक और भी चीज पता चलेगी कि वायरसेस कैसे इंस्टॉल कर। इस में आया 5 टाइप ऑफ मोस्ट वर्स्ट वायरसेस जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थे, उन्होंने वर्ल्ड में कितनी ज्यादा इफेक्ट किया था। नाउ अब समझते हैं वायरसेस के बारे में, ठीक है। वायरसेस क्या होते हैं? तो वायरस क्या है? दैट इज अ विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज, दिस इज अ फुल फॉर्म ऑफ वायरस। है क्या ये? अ पीस ऑफ कोड विच इज capable of copying itself and typically has a devastating effect, and it also require a human being for its implementation. एक पीस ऑफ कोड होता है जिसके बाद कैपेबिलिटी है कि वो खुद से खुद को रेप्लिकेट कॉपी कर सकता है और किसी तरीके के डिवास्टिंग इफेक्ट डाल सकता है आपके सिस्टम के ऊपर, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूमन की एक्शन की आपकी क्या होती है? नीड होती है। तो वायरसेस स्प्रेड बाय रिप्रोड्यूसिंग एंड इंसल्टिंग देमसेल्फ इनटू अ प्रोग्राम, documents or email attachments, and they won't work unless we don't strike them or lead them to the phase of execution. ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, इंसर्ट हो सकते हैं किसी प्रोग्राम के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, ईमेल अटैचमेंट के साथ, जो आपने वीडियोस में देखा होगा, है ना। एंड तब तक वर्क नहीं करते जब तक हम इन्हें फेज ऑफ एग्जीक्यूशन तक, यानी इनके ऊपर स्ट्राइक करके इनको फेज ऑफ एग्जीक्यूशन तक ना लेके जाएं, ठीक है। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, that is an automated software, that is a terabit virus maker. If you are interested to create a virus via the terabit virus maker, so just download via the Google and you just use it. Okay, so मैं आपको terabit virus maker का प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको आगे और डिफरेंट प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा, एंड अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होते हो तो आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आपके पास आता है, that is a fully अनडिटेक्टेबल। ये क्या है fully अनडिटेक्टेबल? एक इस टाइप का कोड जिसको अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर डालें तो उसे कोई भी एंटीवायरस आपका स्कैन ना कर पाए। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं? ये आप क्रिएट करेंगे, जो हमारा मेलवेयर पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि आपका फुल्ली अनडिटेक्टेबल किस तरीके से हमारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। Now let's discuss about some few types of bash coding of viruses जिनको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। So I'm just going to switch my machine with the another one. So you will see the practical part of the creation of different codes of the, that is using by the scripting languages, and that scripting language name is a bash language, right? Okay, so हमने यहाँ पे अपनी मशीन का यूज किया है, that is a Windows 7 मशीन। तो किस तरीके से क्रिएट करना है ये देखो। सबसे पहले आप एक वो ले लो, कोई भी एक फाइल, जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है एक आई लव यू टाइप का वायरस, जस्ट डिलीट दिस वायरस फर्स्ट। ओके, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल ली, जस्ट ओपन द डॉक्यूमेंट फाइल। यहाँ पे आपको एक टाइप ऑफ कोड लिखना है, तो हमें क्या लिखना है, लेट्स सी, बैश कोडिंग करेंगे हम यहाँ पे।
सबसे पहले कॉलन लूप एंटर mkdir हम यहाँ पे मेक डायरेक्टरी बना रहे हैं किस नाम से रैंडम परसेंटेज यानी कि मेक डायरेक्टरी करे बट कोई नाम ना हो उसका रैंडमली वहां पे क्या करे क्रिएट करे एंटर एंड गो टू फंक्शन का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कहाँ पे ले जाने के लिए इसको वापस से लूप पे। तो अगर आपने सी लैंग्वेज या पाइथन या जावा किसी भी टाइप की कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा लूप्स किस तरीके से काम करते हैं। एंड यहाँ पे जो लूप है सबसे पहले लूप चला ठीक है उसके बाद mkdir मेक डायरेक्टरी क्रिएट हुई रैंडम नेम से एंड गो टू लूप करके उसको क्या हुआ यहाँ पे वापस से ये लूप के ऊपर चला गया ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट लूप चलता रहेगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मल्टीपल टाइम्स है ना जब तक हम इसे क्लोज नहीं करेंगे। नाउ सेव आपको कैसे करना है तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द सेव एज एंड जस्ट सिलेक्ट द नेम ओके सो यहाँ पे जो आप फाइल क्रिएट करी है उसका आपको नाम देना है तो आई एम जस्ट यूजिंग अ नेम दैट इज आई लव यू .bat फाइल ठीक है। अगर आपने बैश नहीं दिया तो यहाँ पे ये फाइल क्या करेगी रन नहीं करेगी तो .bat फाइल जस्ट क्लिक टू सेव। तो मेरी फाइल यहाँ पे देखो जनरेट हो गई है। होती क्या है बैट फाइल दैट इज अ विंडोज बैश फाइल बोलते हैं इसे दैट इज अ प्री एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब भी आपकी exe फाइल रन करती है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है उससे पहले आपकी बैश फाइल को हम रन कराते हैं ठीक है। सो जस्ट आपने बैश फाइल को रन कराना है। अब देखो उसको रन कराने से पहले लेट्स चेक द प्रोसेस मॉनिटर। So now look at here, the space is basically that is 965977 and the processor is using like 6% है ना like 6% हो गया 7 हो गया ऐसे इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है दिख रहा होगा है ना। अब मैंने क्या किया इसको नॉर्मली रन कराया जस्ट डबल क्लिक एंड रन द एप्लीकेशन। पीछे फोल्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। नाउ लुक एट हियर द सीपीयू इज बेसिकली गोइंग टू इंक्रीज ऑटोमेटिक इंक्रीज और 33% 22% एंड यहाँ पे स्पेस देखो इंक्रीज हो रहा है मेमोरी है ना। आपकी मेमोरी इंक्रीज हो रही है जीबीज में जा रही है 99 98% 1 GB हो गई कंप्लीट है ना। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस थिंग। कितनी देर चलाया होगा हमने हार्डली शायद 20 सेकेंड्स या 10 to 20 सेकेंड्स के बिटवीन राइट। कितने फोल्डर्स इसने क्रिएट किए दीज आर ऑल द ब्लैंक फोल्डर्स। इन फोल्डर्स के अंदर एग्जैक्टली कुछ नहीं है अपने आप से नेम उठा रहा है अपने आप से नेम बना रहा है ठीक है। सो इफ आई एम गोइंग टू चेक दैट हाउ मेनी फोल्डर्स आर हियर so let's select all and look at here there are 5068 folders are created in 10 seconds clear। यस सर। तो ये क्या है ये बैश टाइप की आपकी कोडिंग है आप इस तरीके से और भी कर सकते हैं। तो 10 सेकंड में आप देख सकते हो कितना इसने क्रिएट किया। अब इसमें होता क्या है कि जितना अच्छा सिस्टम होगा जितना अच्छा प्रोसेसर होगा जितनी ज्यादा रैम होगी उतनी तेजी से काम करेगा ये मैलवेयर। तो अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास बेटर प्रोसेसर है बेटर है आप और ज्यादा प्रोटेक्ट करते हो नहीं आप कहीं ना कहीं और ज्यादा लैग करते हो। तो एक चीज का ध्यान रखो कि हम यहाँ पे इसको और किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं है ना कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट ऑल दीज फाइल्स कंट्रोल शिफ्ट डिलीट सॉरी शिफ्ट डिलीट नॉर्मली ठीक है। शिफ्ट डिलीट डिलीट हो जाने दो फोल्डर्स को। Now just create a new file again that is a txt file ओपन कर लेते हैं फॉर्मेट ले लो साइज बड़ा कर लेते हैं। अब देखो हमने जो लास्ट टाइम पे क्रिएट किया था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला है परसेंटेज लूप एंटर mkdir मेक डायरेक्टरी। अब वहां पे हमने जो डायरेक्टरी बनाई थी वो रैंडम नेम से थी
है ना, तो इसका नाम नहीं था, बट हम यहाँ पे नाम देंगे इसको। नाम क्या देंगे हम इसको, लाइक आई एम जस्ट सिलेक्टिंग अ नेम दैट इज फोल्डर का नाम दिया लव नाम से, एंटर किया mkdir। अब cd करके हम इस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, तो फोल्डर के अंदर चले आते हैं, डायरेक्टरी के अंदर चले आते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, ASCO इको एक मैसेज दे दो, दैट इज योर सिस्टम इज गोइंग टू हैक, राइट। इसको क्लोज कर दो, ठीक है। एंड इसको सेव कर देते हैं हम इसमें एक फाइल के अंदर, जिसको मैंने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, love.txt, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, गो टू यूज करेंगे वापस से, गो टू लूप्स, ठीक है। सेव कर दो इस फाइल को अगेन, तो सेव एज किस नाम से सेव करेंगे, लाइक I love you dot एंड जस्ट क्लियर। कैसे हमने बनाई, कोडिंग समझ में आई। नॉर्मली हो क्या रहा है इसके अंदर ये समझ लो, अगर आपने कोड ध्यान से ना देखा हो तो दोबारा देख लो, ओपन विथ ओके चलो, तो इसको रन कराते हैं। जस्ट रन किया हमने, फोल्डर्स क्रिएट हुए, नाउ लुक एट हियर, आपके सीपीयू इंक्रीज होने लगा, आपकी मेमोरी इंक्रीज होने लगी, दिख रही है। हाँ सर। तो ये कोड आपको मिल जाएगा नोट्स के अंदर, आप वहां से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैंने इसको क्लोज किया, कितनी सेकंड चला होगा, लाइक वही 10-15 सेकंड हमने इसको रन कराया है। एक फोल्डर क्रिएट हुआ सबसे पहले लव नाम से, एंटर किया, इसके अंदर एक फाइल है जो क्रिएट हुई है, 1 KB की फाइल है, एंटर किया, यहाँ पे एक मैसेज है, सिस्टम इज गोइंग टू हैक, राइट। अब देखो, फिर इसके अंदर गए, फिर एक फाइल है, फिर एक फोल्डर, यानी फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर फाइल, लाइक अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे 1 KB की फाइल है, 1 KB की फाइल बड़ी छोटी सी फाइल है। मैसेज क्या था, बहुत एक सिंपल सी एक लाइन थी, राइट। अगर मैं इसी मैसेज को जो मैंने इसके अंदर प्रिंट कराया है, अगर मैं उसको इंक्रीज करा दूं, इस मैसेज को क्या करूं, इंक्रीज कर दूं, है ना, लाइक इसके पूरे लाइक 10 KB की फाइल, 100 KB की फाइल या MB में फाइल को ले जाऊं, तो उस केस में होगा क्या, आपका स्पेस जल्दी कंज्यूम होगा, राइट। आपका सिस्टम जो है जल्दी मेमोरी को फुल करेगा, और जितनी जल्दी मेमोरी फुल होगी उतनी जल्दी क्या होगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है। तो इसको क्लोज कर देते हैं। नाउ लेट्स चेक हाउ मेनी फोल्डर्स एंड फाइल्स आर क्रिएटेड हियर। So just right click on the folder and just go to the property and look at here, they have 43 files with 42 folders. Clear हुआ कैसे बनाई हमने, यस सर। बढ़िया। So just delete कर देते हैं इसे। सर हम वो सेव फाइल करते हैं ना, उसको नाम वही देना है या कुछ भी दे सकते हैं? आप नाम कुछ भी दे सकते हो। आई एम जस्ट यूजिंग आई लव यू नेम बिकॉज आई लव यू टाइप का एक वायरस था, इसके पीछे एक इंटेंशन है मेरा। क्या इंटेंशन है, जैसे सपोज दैट किसी पर्सन को मैं फाइल सेंड करूं, तो पर्सन थोड़ा क्यूरियोसिटी दिखाएगा इसको रन करने के लिए, तो अगर वो रन कराता है तो उसके सिस्टम के ऊपर इफेक्ट होगा। अदरवाइज सपोज दैट किसी पर्सन ने मेरा सिस्टम हैक कर लिया, उसने सारी फाइल्स निकाल ली, उसे वहां पे एक फाइल मिली आई लव यू नाम की, उसे फिर से क्यूरियोसिटी होगी चेक करने की, वो चेक करेगा, वो अपना ही नुकसान कर लेगा, है ना। तो इस टाइप के लिए मैंने इसको एक ऐसा नाम दिया है। यहाँ पे आप चाहो आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन यू, लाइक आप कीजन बना दो किसी टाइप का, या विंडो की रिकवरी बना दो, या पर्टिकुलर कुछ भी नाम दे दो, लाइक विंडो एक्टिवेटर नाम दे दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या नाम से उसको क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब कैची नाम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबको पसंद आने वाला नाम होना चाहिए ना। सबको पसंद आने वाला नहीं, बेसिकली ऐसा नेम होना चाहिए जो विक्टिम को यूजफुल लगे थोड़ा सा, मतलब विक्टिम उसकी तरफ ऐसा एडिक्टिव हो जाए, उसकी तरफ आकर्षित हो ताकि वो उसको क्लिक करे, ऐसा नेम हम रखते हैं फाइल का। यानी the file is basically a malicious file but it looks to seems like a beneficial to the user या victim, उसको beneficial दिखे, है ना। ओके।
तो इसको डिलीट कर देते हैं इस फाइल को भी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, हम यहाँ पे शटडाउन टाइप का बना सकते हैं। शटडाउन में क्या है, SHUT शटडाउन, DOWN शटडाउन माइनस T एंड माइनस S। यहाँ पे हम उसको कुछ वो दे देंगे, क्या कहते हैं, लाइक कितने सेकंड्स के बाद हम इसको डिलीट कराना चाहते हैं। ओके, पहले माइनस आपको देना पड़ेगा टाइम सेकंड में दे रहे हो, कितना टाइम सेकंड दे रहे हो, वो हम देते हैं लाइक 10 सेकंड का, ठीक है। एंड माइनस C के साथ एक मैसेज दे देते हैं, योर सिस्टम गोइंग टू पावर ऑफ, ठीक है। तो मैंने एक नॉर्मल सा मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो होगा क्या, जब बंदा इस पे क्लिक करेगा तो 10 सेकंड उसको एक मैसेज आएगा कि योर सिस्टम इज गोइंग टू पावर ऑफ, कितने सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। तो 10 सेकंड बाद उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी रन करा सकते हैं, जस्ट सेव दिस फाइल, सेव एज, और यहाँ पे हम इसको देंगे वही लाइक सेम नेम मैं यूज कर रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन यूज अ डिफरेंट नेम आल्सो। अब मैंने इसको रन कराया, जस्ट सिंपली एंड लुक एट हियर, फाइल रन हुई, मैसेज आया योर सिस्टम इज गोइंग टू पावर ऑफ, एंड 10 सेकेंड में सिस्टम ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। हो गया बंद? हाँ, यस सर। क्यों हुआ? बिकॉज वहां पे हमने क्या करी थी, फाइल रन कराई है। ओके, सो दोबारा से चलते हैं, ऑन कर लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे पहले रिसोर्स मॉनिटर्स की यूटिलिटीज चेक कर लो आप। 5%, 16%, 716 MB स्पेस है ना, नॉर्मल अभी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले फाइल ओपन कर लेना। यहाँ पे एक एनदर टाइप ऑफ वायरस का हम यूज करेंगे कोड का। द कोड इज बेसिकली %0। ओहो, ये क्या हो गया? %0 5%0। तो ये कर क्या रहा है, ये पहला वाला आउटपुट है, ये दूसरा वाला इनपुट है, बीच का पाइप लूप का काम कर रहा है। यानी आउटपुट जो है वो इनपुट में जनरेट होगा, इनपुट जो है वो आउटपुट में जनरेट होगा। तो ये लूप इस तरीके से चलता रहेगा, और ये सब इसको बोलते हैं फ्रॉग बॉम्ब। तो ये सबसे इफेक्टिव टाइप ऑफ वायरस होता है। अगर ये सिस्टम के अंदर आ गया आपके और रन हो गया, तो विद इन ए सेकेंड, लाइक 10 सेकेंड के अंदर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, टास्क मैनेजर को, आपकी यूटिलिटीज को यहाँ पे एकदम से बढ़ेगी और कुछ समय टाइम पीरियड बाद ये सिस्टम क्रैश होने की कंडीशन पे हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सो सेव करते हैं पहले फाइल को। मैंने यहाँ पे दे दिया सेव iloveyou.bat फाइल, जस्ट सेव डॉक्यूमेंट्स। ये रही फाइल आपकी। जस्ट फाइल पे आपको डबल क्लिक करना है एंड सी द टास्क मैनेजर। ध्यान से देखो, रन हुई, देखो सीपीयू कितना हो गया, 100%। मेमोरी देखो कैसे बढ़ी, मैसेज आ गया। मैं इस पे कितना क्लिक करूं, कुछ नहीं होगा, यस सर। सिस्टम क्रैश होने की कंडीशन पे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच ऑफ दिस कंडीशन सिस्टम, अदरवाइज क्रैश हो जाएगी मशीन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम छोटे छोटे कोड से यूज करके अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज को कर सकते हैं, राइट। यस सर।
अब अगर आप और इंटरेस्टेड हो मेलवेयर्स में, आप और आगे करना चाहते हो, यू जस्ट लर्न अबाउट अ बैश लैंग्वेज और वहां पे आप कोड करके अलग अलग टाइप के मेलवेयर्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। So guys, आज के लिए इतने ही रखेंगे, then we will cover at the next class that will be here tomorrow, ठीक है, same time 3 o'clock, and देखते हैं आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलवेयर्स को हम और पढ़ेंगे, उनके प्रैक्टिकल्स देखेंगे, then उनको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, No, बाय बाय।